Hi students, so welcome to our analysis of the sample papers recently released by CLAT Consortium for CLAT 2023. A lot of you were waiting eagerly for these sample papers to decide that you are going in the right direction or not. So no surprises as such, but before I begin with the sample papers, let us have a quick look at what has been there in the past 3 years. क्या रहा है 2020, 21, 22, and then we'll come to the sample papers. So if we talk about यहाँ पे if we check about the sample papers, so sample papers से पहले let us check 2020 क्या रहा था 2020 में the pattern changed and we had 28 CR questions with 2 AR questions. We had 5 passages from CR. Then 2021 we had 30 CR questions with 0 AR questions with 6 passages. 2022 it was the same thing. We had 30 CR, 0 AR and 6 CR passages. So what's now in the sample papers वो भी देख लेते हैं अब. So as I said, no surprises here. We had 6 passages here. The main thing that has changed here is now the name. So far CLAT has been using logical reasoning. Now the name has changed to critical reasoning. Logical reasoning word ही हटा दिया गया है. Critical reasoning is the name given to this section. जो कि last 2 years we were getting only critical reasoning questions. तो वही अब नाम भी बदल दिया गया है CR. We had passages की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, in the sample papers we had 6 passages as expected. Sources अगर हम देख लें यहाँ पे sample papers के अंदर जो sources दिए हुए हैं, so 3 are from editorials. एक हमारे पास है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, देन फ्रॉम वायर एंड फ्रॉम अटलांटिक. So these 3 editorials. Then we had 2 excerpts from books, both from economics, and then 1 charity website. So a website which supports charity from there. So this is how the breakup of the sources. Then if we look at the words of these passages, the word length, so word limit की अगर हम बात कर लें तो that ranges from 351 words shortest to the longest 481 words of the passage. यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि in 2021, that is just last year, we had one passage whose length was 604 words. तो वो भी हमारे पास आ चुका है. तो something like this can be there. Then if we look at the question stem, so the expected ones, you had your inferences, parallel reasoning, strengthen, weaken, etc. The regular question stems, they were there. And if we talk about vocabulary, the level of vocabulary, so though we had some words in each of the passages, but as such, not very difficult, we will say, to understand. Like for instance, just 1 or 2 words were there, heavy words, which we can say, like passage 1 के अंदर you had this oblivious used. पैसेज 2 के अंदर अगर हम देख लें तो यू हैड दिस एनविसेज और टॉयल, ये यूज किया गया. थर्ड के अंदर अगर हम देख लें पैसेज में, दैट इज लाइक वेंचर्स, सो 1 और 2 फ्रॉम ईच वन. बट फोर्थ में जो यूज किया गया है इम्पीच, सो इफ यू डू नॉट नो इम्पीच तो यहाँ पे आपके पास पूरा पैसेज समझने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज द एंटायर पैसेज वाज बेस्ड ऑन दिस इम्पीचमेंट. तो वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बिना यू विल बी finding it difficult that what the passage is saying. Otherwise in 5 again they had used words like punctilious,
So good if you know this, it will be easy for you to understand. नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको passages समझ में ना आए because language ऐसी है. वो सिर्फ fourth के अंदर है. Sixth में again they used like private equity. So words like these. So apart from fourth, ऐसा नहीं है कि words बहुत ज्यादा मुश्किल हो या passages they were very heavy to understand. Overall अगर level of difficulty, if you know what is impeachment, तो फिर overall level of difficulty of understanding a passage, that is easy to moderate here. And then finally, the most important part, that what are the learnings here that we have from this. So एक तो क्वेश्चन अक्सर ये आ जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या दिस मच टाइम इज सफिशिएंट. अब बिकॉज वी डू नॉट हैव हार्डली हैव 2 months, तो इज दिस टाइम सफिशिएंट? यस, इट इज सफिशिएंट. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन. डोंट गिव अप एट दिस टाइम. तो क्या हमारे पास टाइम सफिशिएंट है यहाँ पे? यस, इट इज. You have sufficient if you prepare diligently. If you prepare with persistence, you have give it your best shot, the best you have, the best you can, and you will come out with good ranks. Then यहाँ पे हमारे पास अगर हम देख लें क्वेश्चन स्टैम्प्स, तो द रेगुलर क्वेश्चन स्टैम्प्स दैट हैव बीन कमिंग आउट वही यहाँ पे आपके पास आ रही है. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन, द मेन पॉइंट, what is parallel reasoning, how to strengthen the argument, how to weaken the argument, all these type of questions they were there. Then यहाँ पे reading speed, that is further enforced, that you need to have a good reading speed. यहाँ पे it is good that ideally you should be having a 220 words per minute reading speed, or at least 180 words per minute रीडिंग स्पीड. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है, बिकॉज नॉट जस्ट फॉर दिस लॉजिकल रीजनिंग बट ऑल्सो फॉर योर इंग्लिश, फॉर योर लीगल, यू नीड टू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, ताकि आप जल्दी पढ़ पाओ एंड देन यू आर एबल टू सॉल्व दैट. यहाँ पे सिली मिस्टेक्स की भी एक बात आ जाएगी कि आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दिस, सो हाउ टू ओवरकम योर सिली मिस्टेक्स, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि जब आप बाद में देखते हो पेपर, तो आपको भी समझ में आ जाता है जस्ट बाय लुकिंग एट द आंसर इटसेल्फ, इवन इफ यू डू नॉट गो फॉर द सॉल्यूशन. तो लुकिंग एट द आंसर चॉइस इटसेल्फ यू आर एबल टू रियलाइज कि अच्छा यहाँ पे तो इट वाज आस्किंग लेट अस से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो वो नॉट मिस कर दिया, एक्सेप्ट मिस कर दिया. तो ऐसे सिली मिस्टेक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सिली मिस्टेक्स के लिए यू हैव टू बी मोर केयरफुल. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. मतलब अब अपार्ट फ्रॉम दिस के बी मोर केयरफुल व्हाट, इसके अलावा कुछ समथिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी? नो, वी डू नॉट हैव एनी अल्टरनेट. आपको हैव टू बी मोर केयरफुल. एडिटोरियल्स विल प्ले अ बिग रोल स्टिल इन योर प्रिपरेशन. एडिटोरियल्स में आपको मेनली मोस्ट ऑफ द डिफरेंट जोनर्स दे आर कवर्ड, तो वो आप यहाँ पे पढ़ते रहो, बिकॉज अ हैवी चांस दैट यू विल बी गेटिंग majority of the passages from editorials this time as well in CLAT 2023. Finally, what to do for your close options. Now, even if you are at a beginner level, you will realize that you are able to identify, let us say, uh, one or two options, and then you are stuck in the last two options, or sometimes even three options. कि इनको कैसे अब eliminate कर दें. For close options, please look back at the passage again. Check where the information is coming from. Let us say it is asking you about the assumption. अब आपको बी और सी में तो आपने आराम से एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ए एंड डी में यू आर कंफ्यूज. So check out from which part you are taking out A, which part you are taking out D. If both are similar, then check out what is the difference between the two. Maybe one of them is saying this is a good alternative. Second one is saying this is the best alternative. So good and best, which one is supported by the passage? Generally, we have alternative. जो extreme options हैं, they are wrong generally, but not always. So extreme options like always, never, or everyone, nobody, only, all these are extreme options. So be more careful with these. चलिए, तो we will be meeting you again. Do send your suggestions in the comment box. What else you want to be covered in the upcoming sessions, especially when it comes to critical reasoning. I will try to incorporate this. So that is it from my side. So thank you very much.
Bye bye.